Okay, move to the next problem. We are dealing with Riemann integration, and we will calculate or we will evaluate the integration -1 to 1 modulus of x dx. Modulus of x dx in terms of Riemann sum. काम वही करना है, बहुत छोटा सा काम है. आपको क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन. गिवन फंक्शन क्या है आपका? द गिवन फंक्शन इज modulus of x equals to x if x is greater than equals to 0 and minus of x if x is less than 0. आपने करना क्या है, जो आपका इंटरवल है -1 to 1, सबसे पहला काम है कि उसका पार्टीशन कर लेना है. तो कंसीडर द पार्टीशन. कंसीडर द पार्टीशन P of -1 to 1 such that P equals to -1 plus 1 by n -1 plus 2 by n and dot for ith point, that is for I minus 1th point, and it will be -1 plus I minus 1 by n and -1 plus I by n, and it will go up to n partition, and it will be 0. After that 1 by n, 2 by n, dot I minus 1 by n comma I by n dot up to 1. With 2p points, with 2n points, and the length of each subinterval, the length of each subinterval is 1 by n. The length of each subinterval is 1 by n. Here we have the 2ith subinterval xi minus 1 comma xi for -1 to 0, that is equals to -1 plus I minus 1 by n comma -1 plus I by n, and yi minus 1 comma yi is the another ith subinterval for the interval 0 comma 1, that is equals to I minus 1 by n comma I by n. अब इसके बाद कुछ नहीं बचता. आपको करना क्या है, एक जाया इससे लेना है और एक जाया आपको इससे लेना है. इसके ऊपर भी आपको रिमांड सम निकालना है और इसके ऊपर भी आपको रिमांड सम निकालना है और फिर उसकी लिमिट ले देनी है एज यूजुअल. नाउ लेट xi belongs to xi minus 1 comma xi and zx I belongs to yi minus 1 comma yi. Then इसको ऊपर से उठा दें.
then S P F equals to S P minus 1 comma 0 comma F plus S P 0 comma 1 comma F। इस आप रिमान सम लेंगे -1 से 0 के ऊपर और देन 0 से 1 के ऊपर, और ये क्या होगा आपके पास समेशन I runs from 1 to n, I runs from 1 to n F at the point, अगर आप बात करें -1 से 0 के बीच में, तो आप इनमें से किसी पॉइंट पे ले लीजिए, तो इस पॉइंट पे ले लें आप या इस पॉइंट पे ले लें। चलिए इस पॉइंट को लेके चलते हैं इस बार। तो ये हो गया -1 प्लस I by n, और डेल एक्स है वो इक्वल पार्टीशन है तो 1 by n रहेगा, देन प्लस समेशन I runs from 1 to n, और 0 से 1 में जो आप पॉइंट ले रहे हैं जायड एक्स, वो इसमें से कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, yi-1 या yi ले लीजिए। तो yi-1 और yi क्या है आपके पास, i-1/n कोमा i by n, इनमें से कोई भी एक पॉइंट आप चूज कर लीजिए। चलिए आप f चूज कर लीजिए i by n पे, और पार्टीशन की लेंथ तो आपके पास इक्वल है। नाउ व्हिच इज इक्वल्स टू समेशन I runs from 1 to n। What about this? फंक्शन हमारा जो रहेगा -1 से 0 के बीच में -x रहेगा, तो माइनस ऑफ -1 प्लस I by n इंटू 1 by n एंड प्लस समेशन I runs from 1 to n, और आपके पास 0 से 1 के बीच जो फंक्शन रहेगा वो x रहेगा, दैट इज I by n इंटू 1 by n। काम वो सेम है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, कुछ भी अलग नहीं करना है, बहुत ही आसान काम है। नाउ व्हिच इज इक्वल्स टू समेशन I runs from 1 to n and it is 1 minus I by n, that is 1 by n, and plus summation I runs from 1 to n I by n square, and if we see that this summation will be cancelled out by this, so बचा क्या हमारे पास, this implies that summation I runs from 1 to n or 1 by n, which is nothing but 1 by n into n, that is equals to 1. So this implies that limit of norm of p tends to 0 and SPF, that is limit and tends to infinity. HP norm of p tends to 0, what does it mean? Limit and tends to infinity, that is partitions are going to infinity, and SPF, which is equals to 1. And this implies that the limit exists. This implies that the limit exists, and this implies that the function modulus of x is integrable over -1 to 1. Moreover, -1 to 1 modulus of x dx is equals to 1. That's all. तो रिमान सम पे काम करना हमारे लिए बहुत आसान है इन कंपैरिजन ऑफ अपर सम्स, लोअर सम, that is Darboux conditions.